Assalamu alaikum students of class 9. This is the third video lesson of unit 5. Title of the unit is the Medina Charter. We were solving the exercise. Part A of the writing is compare Medina Charter with the UN Human Rights Charter. मदीना चार्टर और ह्यूमन राइट्स चार्टर जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था उनमें कंपैरिजन कीजिए. आंसर क्या है उसका? द मदीना चार्टर वाज मेड बाय प्रॉफिट अंडर द लाइट ऑफ डिवाइन गाइडेंस 1400 years ago, whereas the human rights charter was made by United Nations in 1948. मदीना चार्टर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वही की हदायत के मुताबिक बनाया था, जबकि ह्यूमन राइट्स चार्टर यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में बनाया था. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, the right to live freely and safely mentioned in the Medina Charter were adopted by the United Nations. इंसानों के बुनियादी हकूक यानी इंसानों के दरमियान बराबरी, आज़ादी से रहने का तसव्वुर और हिफाजत से रहने का, महफूज रहने का तसव्वुर, ये सब मदीना चार्टर में ओरिजिनली दिए गए थे, जबकि ये यूनाइटेड नेशंस ने मदीना चार्टर से अडॉप्ट किए थे यानी उनसे अपनाए थे. It was also decided that there would be no discrimination against any human being on the basis of color and caste. ये भी फैसला किया गया था कि इंसानों के दरमियान उनके रंग और उनके नस्ल की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं की जाएगी. डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं तफरीक को, कोई इम्तियाजी बर्ताव नहीं किया जाएगा और किसी को कलर की बुनियाद पर, मसलन गोरे और काले को, या किसी नस्ल या ज़ात पात की बुनियाद पर किसी को दूसरे पर बर्तरी नहीं होगी. The law would be the same for everyone. कानून सबके लिए यकसा होगा. The children, women and the other weak segments of society would be given legal protection. बच्चों को, औरतों को और दूसरे कमज़ोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा. All these principles were taken from the Medina Charter. और यूनाइटेड नेशंस ने ये तमाम असूल जो थे ये मदीना चार्टर से अडॉप्ट किए थे. यानी जो यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन बनाया था उसमें बहुत सारे असूल मदीना चार्टर से लिए गए थे. दूसरा सवाल है, डेवलप अ माइंड मैप एंड राइट डाउन द समरी ऑफ द लेसन द मदीना चार्टर. एक माइंड मैप बनाइए और उससे समरी लिखिए कि मदीना चार्टर पूरे लेसन की समरी किस तरह से बनेगी. बेटा माइंड मैप के बारे में आपको बता दें कि माइंड मैप क्या होता है. माइंड मैप इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज. जब आपके जहन में कुछ लिखने का ख्याल हो और आप किसी टॉपिक के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात जमा करें और अपने जहन में ही उनको तरतीब दें, उसको माइंड मैप कहते हैं. बाज़ दफ़ा जहन में दी गई तरतीब काफ़ी नहीं होती, इसलिए उसको सफ़हे पर मुंतकिल किया जाता है यानी लिखी हुई शक्ल में लाया जाता है और उसी को हम माइंड मैप कहते हैं. मिसाल के तौर पर ये दरमियान में आप देखें तो मदीना चार्टर लिखा हुआ है. अब मदीना चार्टर का पूरा लेसन हमने पढ़ा है, हमें मालूम है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं. सबसे पहला और सबसे अहम जो पॉइंट था वो ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड विद हिज फेथफुल फॉलोअर्स टू मदीना. यहीं से मदीना चार्टर की बात शुरू हुई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सच्चे पक्के वफादार साथियों के साथ मदीना हिजरत कर गए. दूसरा अहम पॉइंट ये था कि द मुस्लिम्स हु हैड माइग्रेटेड टू मदीना वर कॉल्ड मुहाजिरीन एंड द मुस्लिम्स लिविंग इन मदीना वर कॉल्ड अंसार. जो मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आए उन्हें मुहाजिरीन कहा जाता था, और जो मदीना में ही रहाइश पजीर थे पहले से और उन्होंने मुसलमानों की मदद की थी उन्हें अंसार कहा जाता था. In order to create peaceful coexistence, Rasul sallallahu alaihi wasallam abolished tribal distinction and drafted the Medina Charter. आपस में हम आहंगी और अमन के साथ रहने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम किस्म के कबायली इम्तियाज़ात, ट्राइबल डिस्टिंक्शंस क्या हैं, मुख्तलिफ कबीलों का आपस में जो मुकाबला होता था, एक कबीला अपने कबीले को बरतर कहता था, दूसरा अपने कबीले को बरतर कहता था, इसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खात्मा किया और मदीना चार्टर बनाया. ड्राफ्टेड का मतलब है यहाँ पर मदीना चार्टर लिखा गया या बनाया गया. The charter was signed to create tolerance and harmony amongst the people of Medina. It contained principles of freedom and equality. ये चार्टर इसलिए
اس پر اس لیے دستخط کیے گئے تھے کہ آپس میں برداشت، ہم آہنگی، امن کا ایک ماحول بنایا جائے اور مدینہ کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ رہ سکیں۔ اس میں آزادی اور برابری یعنی لوگوں کے درمیان مساوات اور آزادی کے اصول سب سے اہم تھے۔ In 1948, the United Nations adopted the Declaration of Human Rights, which contained clauses of the Medina Charter. یہ بہت اہم بات ہے کہ آج کے دور میں جبکہ مسلمانوں کو اس دنیا کے بعض لوگ بیکورڈ سمجھتے ہیں یا ان کو دنیا کی دوڑ میں پیچھے سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ 1948 میں اقوام متحدہ نے جو ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنایا تھا اس کی بنیاد مدینہ چارٹر کے بہت اہم اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ The last point is the declaration proclaims the personal, social, religious and economic rights of people. اور اس ڈیکلریشن میں جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے مدینہ چارٹر کی بنیاد پر بنایا تھا، اس میں کن چیزوں کی اہمیت بتائی گئی تھی؟ پروکلیمز کا مطلب ہے ان کی اہمیت بتانا، ان کو اپنانا، ان کو فالو کرنا۔ ذاتی، معاشرتی، مذہبی اور معاشی یعنی مالی ان سب رائٹس کی لوگوں کو تحفظ کا یقین دلایا گیا تھا کہ ان کے ان حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ بیٹا اب انہی سارے پوائنٹس کو یہ جو یہاں پر آپ کو میپ کی صورت میں لکھے گئے ہیں، ان کو اگر آپ ترتیب وار لکھ دیں تو یہ دا مدینہ چارٹر کی سمری بن جائے گی، جو کہ آپ کا اگلا سوال ہے۔ سمری آف دا لیسن، یہ چونکہ میں آپ کو ایک دفعہ اردو میں سمجھا چکی ہوں اس لیے میں صرف اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لوں گی تاکہ آپ لوگ لکھ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated with his faithful followers to Medina. The followers of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam who had migrated were known as Muhajirin, and the new converts of Medina who had helped Rasul sallallahu alaihi wa wasallam through thick and thin were known as Ansar. In order to create harmony and cooperation between all the communities of Medina, Rasul sallallahu alaihi wa sallam first abolished the tribal distinction and then drafted a charter known as the Medina Charter. This charter was signed to create tolerance and harmony and contained principles of equality and freedom for all the people of Medina. In 1948, the UN adopted the Declaration of Human Rights, which clauses of the Medina Charter. This declaration proclaims the personal, social, economic and religious rights of all the people. یہ سمری بیٹا آپ نے اپنی کاپیز میں لکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ مائنڈ میپ آپ کی صرف ہیلپ کے لیے، آپ کو یہ سکھانے کے لیے ہے کہ کسی بھی لیسن کی سمری یا کسی بھی پوائنٹ کو کس طرح لکھا جاتا ہے۔ پہلے ذہن میں خیالات جمع کیے جاتے ہیں، پھر ان کو کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے، اور ہر پوائنٹ کو جب آپ ڈیٹیل سے بتاتے ہو تو وہ ایک پیس آف رائٹنگ بن جاتا ہے، سمری بن سکتی ہے، کہانی بن سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو۔ باقی ایکسرسائز ہم اگلی ویڈیو میں سالو کریں گے۔ یہ سمری اور اس کے علاوہ یہ مائنڈ میپ آپ نے اپنی کاپی میں اچھے سے لکھنا ہے۔